गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है न्यू इनकम टैक्स बिल 2025। टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। फाइनेंस मिनिस्टर ने जो है न्यू इनकम टैक्स बिल लोकसभा में जो है वो टेबल कर दिया है। ये बिल जो है वो सिंप्लीफाई करेगा टैक्स लॉज को, कंप्लायंस को ईजी बना देगा और एक स्ट्रीमलाइन टैक्स रिजीम देगा कंट्री में। ओवरऑल टैक्स स्ट्रक्चर जो है उसको चेंज तो नहीं किया गया है, लेकिन ये बिल जो है एक स्टेप है मोर एफिशिएंट टैक्स फ्रेमवर्क देने का। इस बिल में डिफाइन किया गया है टैक्स ईयर जो है वो 12 महीने का पीरियड होता है, अप्रैल 1 से शुरू होता है। और टैक्स को जो है वो उसी सेम ईयर जो है वो टैक्स ईयर में ही अब कैलकुलेट किया जाएगा। अब आपको वो याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी असेसमेंट ईयर कौन सा है, या फिर जो है टैक्सेबल इनकम कौन से साल की आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो बिल में प्रोविजंस को रिड्यूस किया गया है। क्रॉस रेफरेंसिंग जो हुई थी पहले ओरिजिनल इनकम टैक्स एक्ट में, उसको भी ख़त्म किया गया है। कॉम्प्लेक्स एक्सप्लेनेशंस को भी ख़त्म किया गया है। तो जो लेंथ है इनकम टैक्स एक्ट की उसको भी रिड्यूस किया गया है। नंबर ऑफ़ चैप्टर्स जो है वो अनचेंज हैं, 23 के 23 चैप्टर ही हैं। नंबर ऑफ़ क्लॉजेज जो हैं वो एक्चुअली में इंक्रीज़ हुए हैं। ओके, न्यू बिल जो है वो उसमें वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के भी प्रोविज़न है, जैसे क्रिप्टो करेंसीज या एनएफटीज़, और उनको पार्ट ऑफ टैक्सेबल कैपिटल एसेट्स माना गया है। इस बिल में जो है आउटडेटेड एग्जामेशंस को रिमूव कर दिया गया है। कई प्रोविजंस जैसे टीडीएस जो रूल्स हैं, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन रेट्स हैं, असेसमेंट टाइम लिमिट्स हैं, उनको कंसोलिडेट करके इजी टू रीड टेबल्स में बना दिया गया है। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इम्पैक्ट ये होगा कि मल्टीपल क्रॉस रेफरेंसेस हटा दिए हैं, तो टैक्स पेयर जो है वो आसानी से जो है वो प्रोविजंस को जो है इस बिल में पढ़ पाएगा। लैंग्वेज जो टैक्स लॉज की है वो भी सिंप्लीफाई की गई है। बिल जो है इसमें कंसोलिडेट किए गए हैं कई तरह के प्रोविजंस, जो कि रेवेन्यू रिकॉग्निशन से रिलेटेड हैं, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री से, इनकम एक्सक्लूजन से रिलेटेड हैं। तो एक तरह से स्ट्रीमलाइनिंग की गई है टैक्स फाइलिंग की और कंप्लायंस की। तो बिल जो है उसमें न्यू सेक्शंस को इंट्रोड्यूस किया गया है जो रेवेन्यू रिकॉग्निशन कर रहे हैं। और डिजिटल एसेट्स, ऑनलाइन इनकम सोर्सेज जो हैं वो उसमें क्लियरली अब क्लासीफाई किया गया है अंडर कैपिटल एसेट्स उन्हें, और इंश्योर किया ताकि इंश्योर किया जा सके उनकी फेयर टैक्सेशन को। जबकि इतनी ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन की है, बिल में कोई मेजर चेंज नहीं है टैक्स रेट से रिलेटेड, पेनल्टी से रिलेटेड या कंप्लायंस मैकेनिज्म से रिलेटेड। टैक्स पेयर और बिजनेसेस जो हैं उनको टाइम लगेगा टैक्स ईयर कंसेप्ट को समझने में, और अकाउंटेंट और जो फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स हैं उनको अपने सिस्टम्स को अपडेट करने में और प्लान करने में, स्ट्रेटजीज़ को, टैक्स प्लान स्ट्रेटजीज़ को, उसको ले समय लगने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं आर्टिकल 356 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। टॉपिक पॉलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 4 दिन के बाद जब मणिपुर सीएम ने रिज़ाइन किया, अब जो है मणिपुर में प्रेसिडेंट्स रूल लगा दिया गया है आर्टिकल 356 के अंदर। आर्टिकल 356 जो है वो प्रेसिडेंट रूल को कवर करता है ओवर अ सर्टेन स्टेट और यूनियन टेरिटरी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से इसको डिराइव किया गया है। तो होता क्या है कि जब प्रेसिडेंट को एक रिपोर्ट मिलती है एक स्टेट के गवर्नर से, या फिर वैसे भी कि स्टेट की सिचुएशन बहुत ख़राब है और स्टेट गवर्नमेंट अब कैरी नहीं कर सकती गवर्नेंस अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, तब जो है उसमें वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है। अब आर्टिकल 365 में ये कहा गया है कि प्रेसिडेंट रूल तब लगाया जाएगा जब कोई स्टेट यूनियन की डायरेक्शंस मानने से मना कर देती है, तो यूनियन के पास ये पावर है कि वो वहाँ पर प्रेसिडेंट्स रूल लगाए। तो स्टेट गवर्नमेंट को सस्पेंड कर दिया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ पर डायरेक्टली एडमिनिस्टर करने लग जाती है स्टेट को थ्रू ऑफिस ऑफ गवर्नर। तो इसको हम स्टेट इमरजेंसी या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कह सकते हैं। पार्लियामेंट्री अप्रूवल की ज़रूरत होती है इसमें। तो इसको जो है वो दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट से विद इन 2 मंथ्स ऑफ इट्स इशू पास करवाना पड़ता है एक सिंपल मेजॉरिटी से। प्रेसिडेंट रूल जो है इनिशियली 6 महीने के लिए वैलिड होता है, लेकिन 3 साल तक इसको एक्सटेंड किया जा सकता है विद पार्लियामेंट्री अप्रूवल एवरी 6 मंथ्स। लेकिन 44th अमेंडमेंट की गई जब कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें कुछ कंस्ट्रेंट्स डाले गए, जैसे कि प्रेसिडेंट रूल जो है वो 1 साल से ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता अनटिल और अनलेस अगर देश में इमरजेंसी लगी हो, या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कह दे कि प्रेसिडेंट्स रूल की ज़रूरत है क्योंकि वहाँ पर इलेक्शन नहीं कराए जा सकते, तब जो है इसको 1 साल से ज़्यादा तभी बढ़ाया जा सकता है। जब एक बार प्रेसिडेंट रूल लगा होता है तो प्रेसिडेंट जो है वो फंक्शंस ले लेते हैं स्टेट गवर्नमेंट के। स्टेट को गवर्नर के थ्रू जो है वो एडमिनिस्टर करते हैं। गवर्नर भी जो है वो चीफ सेक्रेटरी की हेल्प से गवर्नमेंट चलाते हैं। पार्लियामेंट जो है वो स्टेट बिल्स और बजट को पास करते हैं उस पर्टिकुलर स्टेट की। पार्लियामेंट के पास लॉ मेकिंग पावर्स आ जाती हैं, वो या तो प्रेसिडेंट को दे सकते हैं या किसी और अथॉरिटी को भी दे सकते हैं। ठीक है, अब प्रेसिडेंट रूल से जो है वो फंडामेंटल राइट्स जो हैं सिटीजन्स के वो अफेक्ट नहीं होते हैं, अनलाइक नेशनल इमरजेंसी।
प्रेसिडेंट रूल को कभी भी ख़त्म किया जा सकता है, कोई इसकी पार्लियामेंट्री अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ब्रिक्स। टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। यूएस प्रेसिडेंट ने एक ब्लंट वार्निंग दी है ब्रिक्स कंट्रीज़ को कि अगर वो उन्होंने कॉमन करेंसी लॉन्च की तो 100% टैरिफ लगाई जाएगी यूएस द्वारा उनके ऊपर। तो ब्रिक्स जो है वो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका का एक एक्रोनिम है जो कि 2001 में क्रिएट किया गया था। तब सिर्फ ब्रिक होता था तब, क्योंकि साउथ अफ्रीका तब पार्ट नहीं था। साउथ अफ्रीका 2010 में आया। और इनफॉर्मल मीटिंग्स जो हैं वो 2006 से शुरू हो चुकी थी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के अंदर ही। ठीक है, तो वर्ल्ड का मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवलपिंग कंट्रीज़ का एक ग्रुप है जो चैलेंज करता है पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर ऑफ वेल्थियर नेशंस को। एक जियोपॉलिटिकल ब्लॉक बन चुका है ये ब्रिक्स, काउंटर बैलेंस करने के लिए वेस्टर्न डोमिनेटेड ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस को, जैसे आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक को। अब न्यू मेंबर्स इसमें हैं सऊदी अरेबिया, ईरान, इथोपिया, यूएई, इजिप्ट, इंडोनेशिया ने भी अभी लास्ट मंथ ही ज्वाइन किया है। ब्रिक्स कंट्रीज़ लगभग 44% ऑफ टोटल वर्ल्ड के क्रूड ऑयल को रिप्रेजेंट करती हैं, जब से ईरान, सऊदी अरेबिया और यूएई जो है वो इसके मेंबर्स बने। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। टॉपिक आपके एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक न्यू क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया का 6th रैंक आया है टॉप 10 कंट्रीज़ में जो कि मोस्ट अफेक्टेड हैं बाय एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2006 से पब्लिश हो रहा है। एनुअल क्लाइमेट इम्पैक्ट रिलेटेड इंडेक्सेस जो है कवर करता है। क्लाइमेट रिलेटेड एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की क्या डिग्री है, इफेक्ट ऑन कंट्रीज़ है, उसको एनालाइज करता है। और बैकवर्ड लुकिंग इंडेक्स है जो रैंक कर रहा है कंट्रीज़ को बाय देयर इकोनॉमिक और ह्यूमन इम्पैक्ट्स। पब्लिश किया गया है इसको बाय जर्मन, किया जाता है इसको बाय जर्मन वॉच। तो इंडिया अमंग द 10 कंट्रीज़ है मोस्ट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। 6th इसका रैंक है बाय इंडिया का 6th रैंक है क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में। इंडिया में 400 से ज़्यादा एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हुए। ओके, और फ्लड्स, हीट वेव्स, साइक्लोन्स जो है इस पीरियड में जो है सबसे ज़्यादा देखने को मिले बिटवीन 1993 एंड 2022। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सुडान वायरस डिसीज़। टॉपिक सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली युगांडन गवर्नमेंट और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कंफर्म किया है आउटब्रेक ऑफ सुडान वायरस डिसीज़। एक वायरल हेमोरेजिक फीवर है ये। इसको पहली बार आइडेंटिफाई किया था सदर्न सुडान में 1976 में। हाई केस फर्टिलिटी है इसमें रेट, और एक्यूट ऑनसेट ऑफ फीवर हो जाता है। कुछ स्पेसिफिक या नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं, जैसे पेन होना एब्डोमेन में, फैटीग रहना, सोर थ्रोट रहना। सिवियर इलनेस भी हो जाती है और उसमें जो है वो हेमोरेजिक मैनिफेस्टेशंस होती हैं। पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन जो है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद ब्लड, बॉडीली फ्लूइड्स, ऑर्गन्स या कंटेमिनेटेड सरफेस से होता है। कोई इसकी वैक्सीन जो है नहीं है, तो इसलिए सिर्फ सपोर्टिव ट्रीटमेंट दी जाती है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं जेसी बोस ग्रांट। ये टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ने अनाउंस किया है न्यू स्कीम जेसी बोस ग्रांट, जो ये रिकग्नाइज करेगी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ सीनियर इंडियन साइंटिस्ट और इंजीनियर्स जो अपनी रिसर्च कटिंग एज साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एरियाज़ में कर रहे हैं, और उनको सपोर्ट किया जाएगा सीनियर लेवल रिसर्चर्स को। पार्टिसिपेंट जो है वो एक्टिव सीनियर इंडियन रेजिडेंट्स होने चाहिए या साइंटिस्ट होने चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो एक हर साल जो है वो किया जाएगा सर्च कम सिलेक्शन कमेटी द्वारा। तो ग्रांट के अंदर एनुअल रिसर्च फंडिंग दी जाएगी 25 लाख रुपए की ड्यूरेशन ऑफ 5 ईयर्स के लिए। ग्रांट को अवेल किया जा सकता है एंटिल द एज ऑफ 68। तो अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का एक एपेक्स बॉडी है जो कि हाई लेवल स्ट्रेटजिक डायरेक्शन देती है साइंटिफिक रिसर्च को कंट्री में एज पर द रिकमेंडेशंस ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ब्रह्मोस एनजी। टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट जनरेशन ब्रह्मोस मिसाइल जिसका नाम है ब्रह्मोस एनजी, इसकी फर्स्ट टेस्ट फ्लाइट होने वाली है और इसकी प्रोडक्शन भी शुरू होने वाली है। एडवांस्ड सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, लाइट है, स्मॉल है, कम्पैक्ट है। 6 टन्स का इसका वेट है, 6 मीटर्स की जो है वो हाइट है, और 6 मीटर्स लॉन्ग है, और मिसाइल की रेंज 290 किलोमीटर्स है, स्पीड 5 मैक तक है, और इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो उसकी लेसर रडार है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वर्जन। ओके, so now let us see all these topics in English.
So the first topic is New Income Tax Bill 2025. This topic is important for your governance section. So Finance Minister has tabled the new income tax bill in Lok Sabha. This bill is aimed to simplify tax laws, making the compliance of tax easier and ensuring a streamlined tax regime. Of course, the overall tax structure remains unchanged, but the new bill is a step towards a more efficient tax framework. This bill defines a tax year as a 12-month period beginning from April 1. Now, the tax will be calculated within the same year, same tax year. There is no need to remember the which is the assessment year and which is the taxable year. So, the bill has reduced provisions, cross referencing, and complex explanations which existed earlier. The length of the Income Tax Act has been reduced, but and the number of chapters remain unchanged. In fact, the number of clauses has increased here. The new bill include various virtual digital assets like cryptocurrencies and NFTs as part of the taxable capital assets. This bill removes outdated exemptions. Several provisions with respect to TDS, presumptive taxation rates, and assessment time limits have been consolidated into easy to read tables. Okay. So, what will be the impact on businesses and taxpayers? So, removal of multiple cross references will ensure that taxpayer will understand a provision without needing to refer to multiple documents. The language of tax laws has also been simplified. The bill has consolidated provisions related to revenue recognition, valuation of inventory, income exclusion and schedules, rather than scattering them across different sections. So, bill has introduced new sections covering revenue recognition for service contracts, reflecting the changing structure of the Indian economy. Digital assets and online income sources are now clearly classified under capital assets, ensuring fair taxation. Despite simplifying provisions, the new bill does not bring any major changes in tax rates, penalties, or compliance mechanisms. Taxpayers and businesses may require time to adapt to the tax year concept. Accountants and financial professionals will need to update their systems and tax planning strategies. Okay. So the next topic is Article 356 of the Indian Constitution. This topic is important for your polity section. So 4 days after the Manipur CM resigned, President's rule has been imposed into the northeastern state, which has been affected by ethnic violence for the past 2 years. So Article 356 refers to the imposition of President's rule over a certain period of over a certain state or union territory. It is derived from the Government of India Act of 1935. If the president receives a report from the state's governor or is otherwise convinced or satisfied that the state's situation is such that state government cannot carry on the governance according to the provisions of the constitution, then president's rule can be imposed. And Article 365 says that president's rule can be imposed if any state fails to comply with the directions of the Union of India, Union government, in fact. So once the president's rule is imposed, the state government is suspended and the central government directly administers that territory through the office of the governor. So you can call it state emergency or constitutional emergency. Parliamentary approval is necessary for the imposition of president's rule. So proclamation of president's rule should be approved in both houses of parliament within 2 months of its issue, and the approval is by simple majority. President's rule is initially valid for 6 months and it can be extended for up to 3 years with parliamentary approval every 6 months. And 44th Amendment has put some more constraints now. Now, President's rule cannot be extended beyond 1 year unless we have national emergency at the country level, or if the Election Commission of India certifies that it is impossible or it is not possible to conduct elections in that state. So once the president's rule gets enforced, president takes up the functions of the state government. State gets administered by the governor. So governor will of course take the help of chief secretary to administer the state. Parliament passes the state's bill and budget, and Parliament also can delegate lawmaking powers to the president or any other authority. But it does not affect any fundamental rights of the citizens, or unlike the national emergency. President's rule can be revoked anytime and it does not require any approval by the Parliament. So the next topic is BRICS. This topic is important for your international relations. So US President has recently issued a blunt warning to BRICS countries that 100% tariff will be imposed on all imports into the US
if BRICS goes ahead with the plan of no common currency. So BRICS is a block of countries which was formed as a partnership following the creation of this term in 2001. The Brazil, Russia, India, China group, BRIC group. South Africa joined in 2010, making it BRICS. So the representatives of BRIC countries began meeting informally during the 2006 meeting under the UN General Assembly. So this group has become world's most important developing countries group to challenge the political and economic power of the wealthier countries. And it is a geopolitical bloc which is capable of counterbalancing the Western dominated influence of IMF and World Bank. So new members now include Saudi Arabia, Iran, Ethiopia, UAE, Egypt, and the latest one to join BRICS is Indonesia in last month. So with the participation of Iran, Saudi Arabia, and UAE as members, BRICS now produces about 44% of the crude oil. Okay. So the next topic is climate risk index. This topic is important for your environment section. So according to a new climate index or climate risk index report, India ranks sixth among top 10 countries which are most affected by extreme weather events. So this report is published since 2006. It is one of the longest running annual climate impact related indices. It analyzes climate related extreme weather events degree on effect of effect on countries, and this backward looking index ranks countries by their economic and human impacts, and it is published by German Watch. Okay, so India is among 10 countries most affected by extreme weather events. It is ranked 6th in the climate risk index 2025. India faces more than 400 extreme weather events, causing a $180 billion in losses. India was affected by floods, heat waves, and cyclones during this period. Okay, this period is about 1993 to 2022. So the next topic is Sudan virus disease. This topic is important for your social issues. So recently, Ugandan government and the World Health Organization has confirmed the outbreak of Sudan virus disease, which is a viral hemorrhagic fever disease identified first in southern Sudan in 1976. So it is a severe disease with high case fatality. It is typically characterized by acute onset of fever with non-specific symptoms. Severe illness may include hemorrhagic manifestations. Person to person transmission occurs by direct contact with blood, other bodily fluids, organs, or contaminated surfaces. There are no approved treatments or vaccines for Sudan virus. Okay. So the next topic is Bose grant. This topic is important for your science and tech section. So recently, Anusandhan National Research Foundation has announced the launch of new scheme called JC Bose grant. So this scheme recognizes the outstanding performance and contributions for Indian scientists, senior Indian scientists, in fact, and engineers to enhance their research in cutting edge scientific and technological areas. So it is designed to support senior level researchers, and the participants must be active senior Indian scientists or researchers with a proven track record of excellence. The process for selection for JC Bose grants will be conducted once a year by Search Cum Selection Committee, and this grant will be provided on an annual research funding of 25 lakh rupees for the duration of 5 years. This grant can be received until the age of 68. So, what is Anusandhan National Research Foundation? So, it is an apex body meant to provide high level strategic direction of scientific research in the country as per the recommendations of the National Education Policy. Okay. So the next topic is BrahMos NG. This topic is important for your security section. So next generation BrahMos missile, which is known as the BrahMos NG, is approaching its first test flight slated for 2026, with production set to commence in 2027-2028 period. BrahMos is an advanced supersonic cruise missile developed jointly by India and Russia. It is a sleeker missile with same capabilities as its predecessor. It is lighter, smaller, and compact. Due to its reduced size, next generation missile system will be able to fit on a wide array of platforms, okay, which includes Russian origin Sukhoi fighter aircraft and even LCA Tejas of India. So it weighs 6 tons and it is 6 meters long. This missile has a range of 290 kilometers and a speed of up to 5 Mach. So this missile will have a lesser uh, radar cross section in comparison to the previous version. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time on Monday now
with new topics. Until then, goodbye and take care.